वेलकम ऑल ऑफ यू समस्त को डीबी प्रोडक्शन विजेट तरफ समस्त को पुणी थे स्वागत। आम क्लास आरंभ करुचे डीबी प्रोडक्शन आपण दुई तीन क्लास अटेंड कर सारे। इंग्लिश क्लास आम सार कर इंग्लिश क्लास सार होती मानवर केसी पंडा। से जड़े रिटायर्ड इंग्लिश टीचर इंग्लिश रे तांकर बहुत एक्सपीरियंस अच्छी। आगुरी मुझे पिला समस्त को इंग्लिश रे बहुत गुड़ा एक्सपीरियंस अच्छी। सार इंग्लिश पढ़ी जीवन काल मध्य बहुत गुड़े स्कूल इंग्लिश पढ़ी सारी एवं रिटायर्ड होगापर बरगढ़ स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रे से बर्तमान गेस्ट फैकल्टी इंग्लिश क्लास कर से भाई जड़े सार को आम पाइसे आम इंग्लिश पढ़ाई निश्चित भाव में आम गर्वित हबार कथा। डीबी प्रोडक्शन विजेज सार पाखे बहुत कृतज्ञ। सार नॉलेज आम पाखे सेयार कर पाखक फ्रीली आम इंग्लिश एवं मैथमेटिक्स क्लास आम सेयार करने सुजोग पाई। सार जो सहयोग मिली यही बयस आसिक जो क्लास कर निश्चित भाव में सार को आम कृतज्ञता जनवा। निश्चित भाव में सार हूँ केसी पंडा रिटायर्ड इंग्लिश टीचर। ताले आसत डेरी करवानी सार आम इंग्लिश क्लास करवा। सार को बहुत धन्यवाद एवं सार को मुझे रिक्वेस्ट करी आम क्लास आरंभ करवा। थैंक यू सर। My affectionate children, welcome to this class of class 10th. We have already taught you about a letter to God in the previous period that we have already completed first two paragraphs. First two paragraphs we have already studied, and we hope that you all have understood that particular two paragraphs. Then we shall start the lesson at page 9 of your book. Page 9, open your book, page 9 and first paragraphs. So, a letter to God, written by, who is the storyteller? The storyteller is G.L. Fuentes. We have also already vividly explained you about the identifications of the poet, the novelist, the storyteller, and also G.L. Fuentes was a journalist and Mexican writer. So, let us start at page 9 from first paragraph. Two paragraphs we have already studied. Now, my dear students, look at your book very carefully, and I am reading. You should also read with me silently. There are two types of reading. One is loud reading, second is silent reading. So with me, you should also read silently. Silently you should read it. Reading is also a skill. जेमिति आमर स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल अच्छी सेपरी रीडिंग मध्य गोटे स्किल। रीडिंग माने पठन, राइटिंग लिखन, स्पीकिंग कथन, एंड लिसनिंग टा श्रवण माने शुनिक बुझवाटा, शुणिक बुझीवाटा, दैट इज लिसनिंग. So this is also a linguistic skills reading. So now I am reading the book, and you should also follow me with your silent reading. With a satisfied expression, she regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly did resembles new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect frozen pearls. It is really getting wet now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley.
The field was white, as if covered with salt. With a satisfied expressions, ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁଁ ଲେଞ୍ଚୋ ଫରକାଷ୍ଟ କରିଥିଲା. ଲେଞ୍ଚୋ was a poor farmer. He forecast is a irregular verb. Three forms are same. এই forecast ଗୋଟେ imperative verb যার ତିନି form সমান. forecast. So Lencho forecast the weather, and his imagination, his film came true that the rain began to fall and also the hailstones began to fall. Hailstones ମାନେ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା. ଲେଞ୍ଚୋ ଖୁସି ହେଇଗଲା. ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଆଗ ଦୁଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲେଞ୍ଚୋ ହେଇଗଲା. ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁନ୍ଦା, ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ କୋଉ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲା? looks like the 10 cent pieces, and small ones looked like the 5s. That means 5 cent pieces. ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ. with a satisfied expression ମାନେ ଆମେ ଫିଲିଂ ଯେନ୍ଟା ଯାହା କରୁଛୁ, ଆମେ ଫିଲ୍ ଯାହା କରୁଛୁ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ he regarded the field of ripe corn with its flower. Regard, there are different meanings of regard here written on the board. Regard is a verb. It is also a regular verb. To look closely. That means look at things very mindfully, very carefully, closely. Observe a thing. Regarded the field of ripe corn with its flower. Se देखिला. Satisfied expression रे, संतोषजनक एक्सप्रेशन रे तार फील्ड को देखिला, खेत को देखिला. फूलरे भर्ती हो जाइछि. फसल फूलरे भर्ती हो जाइछि. Draped in a cotton of rain. DRAPE, drape. What do you mean by drape? Drape means cover or dress. Dress with a cotton of rain. ଗୋଟେ rain ର cotton ମାନେ ଆବରଣ ଲେଖା ହେଇଛି. Not written on the board. Cotton means ଗୋଟେ ଆବରଣ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ rain ର ଆବରଣ ରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି. Draped in a cotton of rains. Ripe corn with its flowers. Ripe corn, ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ, ଫୁଲ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ପାଣିରେ, ଆବରଣ ହେଇଯାଇଛି, ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି. ବଟ୍ ସଡନଲି ଖୁସି ହେଉଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋ. ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ତା ଫସଲ ଭଲ ହେବ, ଫସଲଟା ଚମକିବ, ଫସଲରେ ଭଲ ଅମଳ ହେବ, ଏପରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋ ମନରେ. ବଟ୍ ସଡନଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ a strong wind began to blow. Strong wind, କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ପବନ. strong ଯୋଉଟା ବହୁତ ବେଗରେ ଯୋଉ ପବନ ବହେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ strong wind. gale, the synonym is gale. Gale, gale. You can also say is gale. Gale. Gale means strong wind began to blow. ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା. began. This is a irregular verb. Begin. You must know every word of the lesson. My dear students, you should not forget that. You should know that means the meanings of the every word of the lesson. This is our knowledge orienting teaching. ପିଲାଏ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ଅଛି. One is knowledge orienting and second is exam orienting. Don't study a lesson according to the question answer of your exam. ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବୁ, ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା. ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ? ପରୀକ୍ଷା ଆଉ 2 ମାସ, 1.5 ମାସ, 2 ମାସ ଥାଏ, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ଲାସ୍. But you should improve in English. You should gather knowledge in your brain
of English, so that you cannot get any trouble, you cannot get any difficulty in your higher study. Okay, so to improve English, you must know the every word. BEGIN, begin, BEGAN, begun, or began, or begun, BEGUN. Yes, began to blow, strong wind began to blow, बहुत जोर रे पवन बहिबा आरंभ कला, and along with the rain, एवं वर्षा साथी रे, along with the rain, वर्षा साथी रे कौन पड़ला? Very large hailstones began to fall. Very large hailstones, बड़ बड़ hailstones पड़िवा को आरंभ कला, बड़ बड़ hailstones पड़िला. What do you mean by the hailstone? Hailstones means frozen rain. पिलाए तुम्हें देखिच कुआ पत्थर माने करका भी कहा जाए. फ्रोजेन रेन माने जो वर्षा बिंदुटा बरफ हो जाई थाए, ऊपर बरफ होइकरी पड़े सेटा. तुम्हें ज्योग्राफी रे पढ़िच. Hailstones. You know precipitation? You must know what is precipitation written in the blackboard. Precipitations. There are three types of precipitation. There are three kinds of precipitation. What are they? Eta barshana. माने वर्षण. Precipitation माने वर्षण. जोटा उपरू पड़े. वर्षण माने प्राकृतिक भाव रे वर्षण हेबाटा. That is rainfall. Precipitation, three kinds. One is rainfall, वृष्टिपात. Second is snowfall, बरफपात. In cold countries, you can see the snowfall in cold countries. Also in our India, the foot of the mountains regions, the Himalayas regions, as for example in Jammu and Kashmir, etc., you can also find snowfall in the winter season. बरफपात, rainfall, वृष्टिपात, snowfall, बरफपात, hailfall, करकापात. वृष्टिपात, बरफपात और करकापात. कुआपथर वृष्टि, hailfall. You can also write it. No, don't write hailstone न लिखिकरी केवल hail लिखिले भी चलिबो. A very large hails began to fall. Hailstones began to fall. वर्षा तो हला खुशी होतला. लेंचो बहुत खुशी वर्षा हो गला, फसल भल हेबो. किंतु along with the rain, वर्षा साथी रे कौन पड़िला? Very large hailstones began to fall. बड़ बड़ कुआ पत्थर पड़िवा को लागिला. This truly did resembles new silver coins. Did truly resemble सतरे. Truly माने सतरे. Resemble, we have written resemble is a verb. Be similar, be the same, be equal. समान दिसिबाटा resemble. So difficult words, you must know difficult words and use the difficult words in sentence. एटा भी भल हेबो जे कोनोसी गोटे difficult words रो मीनिंग मने रखिबा आगरू बा मीनिंग मन रखिबा संगे संगे से वर्ड को सेंटेंस रे यूज करो. यूज द सेंटेंस इन ए मीनिंगफुल सेंटेंस. यूज द पर्टिकुलर वर्ड, हार्ड वर्ड इन ए मीनिंगफुल सेंटेंस, so that you can understand the word very clearly. Resembles. Daughter resembles to her mother. Daughter resembles to her mother. ए झीटी ता माँ परी देखा जाउछि बा ता माँ परी, ता माँ रो पूरा पूरी सी इज ए कार्बन कॉपी ऑफ हर मदर. ओके, कार्बन कॉपी. सो resembles to her mother. एका देखा जिबाटा, एका परी देखा जिबाटा. ओके, किपरि देखा जाउथला? दिस ट्रूली, दिस माने से हेलस्टोन्स को दिस कहा जाउछि.
दिज माने हेलस्टोन्स ट्रुली सतरे डिड रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स नुआ नुआ सिल्वर कॉइन्स भलिया देखा जाउथिला। सिल्वर माने रूपा, कॉइन्स माने मुद्रा, रूपा मुद्रा, न्यू नुआ नुआ रूपा मुद्रा भलिया देखा जाउथिला। आउ कुआ पत्थर रंग भी सिल्वरी। इट लुक्स, व्हाट इज द कलर ऑफ हेलस्टोन्स? द कलर ऑफ हेलस्टोन्स इज सिल्वरी, रुपेली रंग देखा जाए। माने कौन? दिच एई कुआ पत्थर गुड़ाक ट्रुली डिड रिजेम्बल्स न्यू सिल्वर कॉइन, नुआ नुआ सिल्वर कॉइन्स भलिया देखा जाउथिला से हेलस्टोन गुड़ाक जोटा बड़ बड़ हेलस्टोन्स पड़ुथिला। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। द बॉयज माने एठारे द बॉयज कौन? द सन्स ऑफ लेंचो। लेंचो रो पुआ माने एक्सपोजिंग टू द रेन। एक्सपोज रो एक्सपोजिंग, एक्सपोज मीन्स बाहर, टू कॉज टू बी विजिबल, बाहर को जाइकरी रहिबाटा, घर जाइकरी बाहर करे रहिबाटा। दैट मीन्स डोंट एक्सपोज टू द सन मीन्स गोटे सेंटेंस लिखा है, वन सेंटेंस आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, दैट डोंट एक्सपोज टू द सन, खरा को जाओ ना, खरा रे तुम्हार बॉडी को एक्सपोज करो ना। ओके, किंतु से कौन करुले? दी बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। बॉयज माने खुशी रे वर्षा रे भिजुथिले, ताको देह को एक्सपोज करुथिले, वर्षा रे भिजुथिले। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स। रेन आउट दौड़ी आसिले, टू कलेक्ट संग्रह करबा पई, कलेक्ट माने गेदर, टू गेदर, टू कलेक्ट जमा करबा पई, संग्रह करबा पई। कौन? द फ्रोजन पियल्स। फ्रोजन पियल्स माने मोती। ए भेरी प्रिशियस थिंग, मोती मुक्ता एटा कहा जाए, पियल्स लिखा है। ए भेरी प्रिशियस थिंग, दैट इज पियल्स। सो प्रिशियस माने, व्हाट डू यू मीन प्रिशियस? यू मस्ट नो एवरीथिंग। प्रिशियस मीन एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली, बहुत मूल्यवान, ऑल्सो वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान। ए वेरी एक्सपेंसिव थिंग, ए वेरी प्रीशियस थिंग, ए वेरी कॉस्टली थिंग्स, बहुत मूल्यवान जिनसटा है, दैट इज पियर्स। इन आवर मदर टंग वी से इट्स मोती। आम मदर टंग रे को मोती बोली कहूँ। से माने पुओ पिला, से ता पुओ माने जो माने कि रेन रे एक्सपोज होथिले, वर्षा रे भिजुथिले, संगे संगे दौड़ी आसिले रेन आउट टू कलेक्ट दी फ्रोजन पियल्स। फ्रोजन पियल्स कहा जाउछि ताको। हेलस्टोन्स हैज बीन कंपेयर्ड टू फ्रोजन पियल्स, माने फ्रोजन बरफ रो गोटे प्रकार मुक्ता भलिया सेटा देखा जाउथला। इट इज रियली गेटिंग बेट नाउ, एक्सक्लेम द मैन। मैन माने जगह लेंचो। इट इज रियली माने एक्चुअली, रियली एक्चुअली, वास्तव रे, सतरे, ट्रूली, इंडिड, जहाँ लिखले भी चलिबो। पिलाए बुझ, गोटे वर्ड रहिबो नाही, गोटे वर्ड रे आमे रहिबा उचित न। we have to improve our vocabulary power, vocabulary knowledge आमे बढ़ेबा। वो कौन कहले? ट्रूली, रियली, एक्चुअली, इंडिड, these are the same categories of words in English. बही रे अच्छे रियली। इट इज रियली गेटिंग बेट नाउ, इट इज रियली गेटिंग बेट नाउ माने जेतेबेले हेलस्टोन पड़ला, लेंचोर मन टी खराब हो गला, लेंचोर मन टी दुखित हो गला। वर्षा होतिला भल, हेलस्टोन पड़वा परे से कहूची कौन? इट इज रियली गेटिंग बेट नाउ। हुज डायलॉग इज दिस? परीक्षा रे पड़े, एग्जामिनेशंस में आस्क यू that it is really getting better now, who exclaim
who exclaimed it, whose dialogue is this? To whom? किए कही क्या कही ये कथाटा लेंचो कही क्या फैमिली मेंबर्स मान तार फैमिली मेंबर्स को exclaimed the man विस्मय रे कहवाटा को exclaimed the man that now it is getting worse खराब हेबाकू जाउछि भलो आउ हेबो नाही because of the hailstones. No, you know, hailstone is a falling of hailstone is a natural calamity. It is a natural calamity, natural disaster. इटा भी बहुत hailstone पड़वाटा भी गोटे होची प्राकृतिक विपर्यय और natural calamity. Do you know natural calamity? This is natural calamity, or instead of calamity you can like disaster. प्राकृतिक दुर्विपाक natural disasters. This is the online class. जदि क्लासरूम रे होइतांता ताहेले नेचुरल कैलामिटी मते पचारि थांता मो स्टूडेंट्स निश्चित भाव पचारि थांते जे सर व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल कैलामिटी यू ओनली से दिस बट यू आर नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड आपण कहि देले सिना किंतु नेचुरल कैलामिटी कोन हमें जाननु बिकॉज़ इट्स स्पेलिंग इट्स मीनिंग एटसेट्रा सो इट इज आल्सो ए नेचुरल कैलामिटी फॉलिंग ऑफ हेलस्टोन्स लार्ज हेलस्टोन्स सेति पई कहला नाउ इट इज गेटिंग बेटर नाउ खराब अवस्था खराब हेबा को जाउछि इट इज गेटिंग बेटर नाउ एटा भलो हेबा को जाउछि इट इज गेटिंग वर्स नाउ एटा खराब हेबा को जाउछि सी लेंचो exclaimed the man exclaimed लेंचो I hope it passes quickly but लेंचो has a great hope किंतु मु आशा करे मोर आशा but I hope it passes quickly passes mean goes pass means go इटा बेसी समय रहइबा नै इटा चली जीवो that means the falling of hailstone would be ceased falling of hailstones will be stopped after some time after a few hours after a little hour it will stop totally it was the hope of Lencho quickly माने जल्दी शीघ्र very soon quickly means very soon I hope it goes away एटा चली जीवो it will stopped but it did not pass quickly किंतु आशा सिना थिला लेंचोर जल्दी इटा सरी जीवो किंतु did not stop quickly it did not pass quickly हेलस्टोन वर्षा बढ़ी चलला गला नहीं बंद हला नहीं for an hour the hail rain on the house गोटिए घंटा for an hour means गोटिए घंटा the hail माने कुआ पत्थर hailstones जहा हेल था मु आगु कहूली तुम्हें केवल हेल कहले भी चलिबो लाइक दैट हेलफॉल hailstones केते घंटा बरसिला for an hour the hail rain on the house घर उपरे वृष्टि हला कुआ पत्थर the garden बगीचा उपरे वर्षा हला कुआ पत्थर the hillside पहाड़ पार्श्वरे hillside रे मध्य वर्षा हला the cornfield also the cornfield of Lencho the cornfield of Lencho which was about to ripe जोटा पाचिबा उपरे थिला all the flowers which were blooming which were flowering फूल फुटुला शस्य पूरा भल देखा जाउथला the crops looks very beautiful and also Lencho's hope that I will grow a good crops I will harvest a good crops this year this was the hope of Lencho
But Lencho became hopeless. Hillside रे पड़िला, garden रे पड़िला, house रे पड़िला, कौन? Hailstone and also cornfield. शस्य क्षेत्र रे भी पड़िला. On the whole valley आमे आगोर पढ़िचु first paragraph. Whole valley means entire valley. उपत्यका, सारा उपत्यका रे कुआपथर वृष्टि ହେଲା. The cornfield on the whole valley, the field was white, as if covered with salt. The field was white. Field माने शस्य क्षेत्र. लेंचोर शस्य क्षेत्र पूरा पूरी धला हो गला. धवल वर्ण पूरा धला धूप फरफर हो गला. As if covered with salt. As if माने सतेज परी. As if माने सतेज परी. से सल्ट विथ सल्ट माने लुण. धला लुण पड़ी पूरा माने आवरण हो जाए. As if सतेज परी. It is a phrase. A man was walking such a way that as if he is a lamb. The man was walking such a way that as if he has drank. एपरी भाव में लोकटे चलुला सतेज परी से मद पीछी. बट ही हैज नॉट ड्रैंक वाइन. मद पी नथिला. कहूँ कौन सी वर्ड को जेकोसी डिफिकल्ट वर्ड तुम्हें भावुछ प्लीज यूज इट इन ए मीनिंगफुल सेंटेंस so that you can understand very clearly and it will be a permanent knowledge in your brain. एटा भूली पारिबो नाही यूज कले. एजिप हमें ओडिया रे भी कहि पारमा. we can say also in our mother tongue. okay, तो जहाँ कहूँ एजिप you did not understand at all. तु जहाँ मते कह तुम्हें मते जहाँ कहूछ एजिप you did not understand at all. सते ना किसी नहीं बुझी बोलिया मते कह बुझीच तार माने तुम्हें बुझीच. एजिप you did not understand at all. So एजिप covered with salt. सते जेपरी सल्ट रे लुण रे गोटे लुणर आवरणी हो जाए पूरा शस्य क्षेत्र रे. What is that? That is hailstones. So here hailstone is compared with the salt. Hailstone भी धला, लुण भी धला. Not a leaf remain on the trees. Not a leaf गोटे भी पत्र. Not a leaf गोटे भी पत्र. Remain रहिला remain रहिबा. Then we stay. stay, reside, remain, be present. These are the same categories of words. Very simple. English is very simple to understand. And also English is very easy to talk. Very easy to speak. But you should develop your desire. तुम्हारा इच्छा हवा कथा. You should develop your desire. Be interested. My students, be interested in English. So what I say? That not a leaf remain on the trees. गोटे भी पत्र गछरे रहिला नाही. मैं देखिथिबो हेलस्टोन्स पड़िले कुआपथर वृष्टि हेले पत्र फूल गछर बहुत क्षति हुए. पूरा वृक्ष गुड़ाक स्केलेटन हो जाती. पूरा कंकाल भलिया देखा जाती. लिवलेस माने पत्र विहीन हो जाती गछ गुड़ाक. नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. गोटे भी पत्र गछरे रहिला नाही गछ मानकरे. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लुक एट योर बुक. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year, we will have no corn. This year, we will have no corn. Very pathetically, that means very
sorrowfully, Lencho exclaimed this. Lencho spoke this. The corn was totally destroyed. जो corn की पूरा पाचिला शस्य फूल फଳରେ भर्ती होइथिला, totally means completely, fully, totally, completely, you can say. The corn शस्य was totally पूरा सामग्रिक भावरे destroyed माने damage. Destroy means damage. DESTROY. 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 It is a verb, means damage. Ruin ହେଇଯିବା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବା, ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, destroy is verb. Examinations में ask you what is the noun form of destroy. Destroy माने नष्ट ହେଇଯିବା, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାଟା, ruin ହେଇଯିବାଟା. This is a regular verb. Destroy, destroyed, destroyed. What is the noun form of destroy? Destruction. Noun form is destroy is verb and destruction is noun. Write it. Note it in your English copy that destroy, destruction, I mean damage. What is written on the book? The corn was totally destroyed. The corn was फसल completely destroyed. पूरा पूरी सबू नष्ट हो गला, पूरा totally. The flowers were gone from the plants. ଯେତିକି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା plants ରେ gone ଚାଲିଗଲା. From the plants ଗଛରୁ. Lencho's soul was filled with sadness. Soul माने मन. SOUL soul. You also know that soul माने आत्मा. But here soul रो body, soul रो मन कौन हैला? Lencho's soul, Lencho रो soul was filled with sadness. Filled माने भर्ती ही गला. Sadness माने दुख, grief. Sad is adjective. Okay. Sad is adjective. NESS plus NESS, sadness. Sadness is noun. Sadness ro meaning GRIEF. Sadness noun. Sad. I was very sad to the news. I was very sad to the news means मुझे बहुत दुख लगला न्यूज सुनी करी. Okay. My mind was filled with sadness after listening the death news of my friend's father. मोर फ्रेंड्स फादर मो बंधुर बापांकर मृत्यु खबर पाई मो बहुत दुखित हेली. My mind was or my soul was filled with sadness after listening the death news of my friend's father. So, use it in the sentence. Grief, GRIEF, grief माने दुख, sadness माने दुख. So, the flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. गोटी भी पत्र रहिला नहीं,
समग पूरा टोटाली डिस्ट्रॉय हो गला कॉर्नटा फ्लावर्स मध्य सब उड़ीगला नष्ट हो गला प्लांट्स रु लेंचोर हृदय लेंचोर मन दुख रे भांगी पड़िला व्हेन दी स्टॉर्म हैड पास्ट स्टॉर्म माने झड़ ये जो झड़टा कुआपथर झड़टा पास हो गला पास माने बीती गला स्टॉप हो गला बीती गला ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड से फील्ड रो मिडिल रे ठिया हैला मिडिल माने मझिरे इन द मिडिल ऑफ द फील्ड शस्य क्षेत्र रो मझिरे से ठिया हैला एंड सेड टू हिज सन्स एवं ता पुओ मानन को कहला सेड टू द बॉयज सेड टू हिज सन्स कोन कहला ए प्लेग ऑफ लकस्ट would have left more than this. A plague of locust means I have written locust, a kind of grasshopper. Locust means a kind of grasshopper. It is an insect. It is an insect. Insect means patanga. Insect means patanga. It is a patanga. कौन locust plural अच्छे locusts locusts तो कही पार ग्रासहपर क्रिकेट क्रिकेट झिंटिका झिंटिका आम कहूँ पंगपाल पंगपाल जो नष्ट कर दिखती गोटे ग्रुप रे आसती पंगपाल लक्ष लक्ष पंगपाल ग्रुप रे आसती से माने फसल को पूरा पूरी खाईकरी नष्ट कर दिखती दैट इज ए प्लेग ऑफ लकस्ट प्लेग मीन्स वर्म प्लेग ऑफ मीन्स ए ग्रुप ऑफ a swarm of this is the collective nouns plague of locust collective nouns रे यही भलिया ग्रुप वर्ड को यूज करा जाए एटा ग्रुप वर्ड और पीस वर्ड्स या को कहा जाए जिमते हमें कहूँ ए बंच ऑफ फ्लावर्स ए पेयर ऑफ बुलक्स ए पेयर ऑफ शूज ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कौन है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स पक्षी माने उड़ी जाउछंती दले दले पक्षी उड़ी उड़ी जाउछंती दैट इज ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स दले पक्षी बसिछंती गछरे कि फ्लोर रे बसिछंती ग्राउंड रे बसिछंती दैट इज ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वी कैन से दिस इज द ग्रुप वर्ड्स लाइक दैट ए प्लेग ऑफ मीन्स ए स्वार्म ऑफ लकस्ट कहले चलिबो ए स्वार्म ऑफ SWARM आई हैव रिटन on the BB I have written that a plague of locust would have left more than this माने प्लेग ऑफ लकस्ट माने दले पंगपाल या ठार बेसी नष्ट कर देछंती एतिकी नष्ट करि नथांती दले पंगपाल आस्तिले भी एतिकी नष्ट करि नथांती दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग हेल माने हेलस्टोन्स लेफ्ट नथिंग किछि नहीं छाड़ला नहीं हैव लेफ्ट नथिंग लीप पास्ट टेंस लेफ्ट LEAV लीप पास्ट टेंस LEFT लेफ्ट दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न यही वर्ष दिस ईयर मीन द प्रेजेंट ईयर दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न आमे शस्य फसल पाइबा शस्य अमल करि पारिबा नाही वी हैव नो हार्वेस्ट we will have no corn. What shall we do in this year? This is a trouble. This is large questions in before the farmer Lencho. Okay, so we shall start the lessons from page 9. That night was a sorrowful one from this. So this is the end of the class and yes, rest is best wishes to all my students. Thank you very much.